stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. Professor, I'm just going to be direct. I know it's uncomfortable that your army has carried out 2 beheadings or mutilations of bodies that your army butchered who deserve to be exterminated from the face of this earth. They shouldn't be. They shouldn't be, but... है और आज 8 तारीख है। मैं 5 दिन पहले जो राशन खरीद कर लाई हूँ, जो राशन मेरे आप देख रहे हैं ना क्या क्या चर्चा चल रही है। अभी हम लोग आज उद्यापासूनच त्यांची मुलाखत पण येते. The Indian soldier are the worst kind of cowards who deserve to be exterminated from the face of this earth. They shouldn't be. They shouldn't be, but... And would you also accept? No, would you say that they were cowards? I want you to say on TV tonight that whosoever do this kind of inhuman acts, whether it's the Indian army, whether it's Pakistani army, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है। चाहे गीता हो या कुरान या बाइबल, सारे धर्म ग्रंथों ने महिलाओं को आदर और सम्मान के शिखर पर बिठाया है। नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी के सदस्यगण जो हैं वो कुत्ते हैं। दिया, काट दिया, मैं छोटा था बच गया, वो बिस्तर पे जो लेटी है वो कोई और नहीं मेरी सगी बहन है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. family of 5 that earns 5,001 rupees and is therefore not poor in the city of Mumbai cannot afford one room. If for 10 years these guys have low prices in order to build market share, it's not the case that the Indian system will not be able to compete, and as soon as they start raising prices... Can private corporate houses provide education to those? My figure is about 60 crore children in India, and the answer was no time in the history of the world this has been achieved without state funding. And you are under a false impression that you're going to solve the problem through private funding. लेकिन हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सिरों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. Okay, the big question then, that biggest legislation the government wants to pass, the food security bill, is it really an election game changer or simply a waste of public and taxpayers' money? At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. भ्रष्टाचार का कानून बना दीजिए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. महिला एट्रोसिटी, कितनी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा, कितना मर्डर खून देश में हो रहा, कानून तो बना हुआ। पर मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. ये देश में लूट चली है और इतना लूट नहीं, कभी तो कुत्ता। Well, the whole idea behind this civil disobedience movement was to remove fear. A lot of people, and there's an overwhelming majority out there who believe in the cause, the fight against corruption, but they're scared to not pay the bills. They feel that the supply would be not restored to them. Yeah. So the idea is not for it to become a spectacle. The idea is not for lots and lots of people to collect and watch the tamasha of an upvas. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. कहकशां दूर ही छोड़ाए हैं हम, बहार के माजी भी अब उगते नहीं हैं। तसव्वुरे हाला हैं लहू लहू,
वतन का चेहरा धज्जी हो गया है। क्या ये मेरा वतन है? गिरा ही गिरा है हाल के बदन पर, बदन जिससे खून रस रहा है, खराशें जल रही हैं। न है अब रुई के फाहे कोई रखने वाला, अब कौन हाथ पकड़ता है? लहू सूख के काला हो गया है, वतन का चेहरा धज्जी हो गया है। रात ही रात अब सीलन नाहें ताका करती है, सूरज गहरी नींद सो गया है, वतन का चेहरा धज्जी हो गया है। क्या तुम जज्बाए हाल से वाकिफ नहीं हो? खैर, तुम चुप रहो।